नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। और आज इस शो में हम बात करने वाले हैं प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यू ललित के छोटे कार्यकाल में क्या कुछ हो रहा है। प्रधान न्यायाधीश यू ललित छोटे कार्यकाल में बहुत कुछ बड़ा करने में जुटे हुए हैं। सीजीआई का कार्यभार संभालने के बाद से ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों को, विशेषकर पुराने लंबित मुकदमों को सुनवाई पर लगाने और उनका निस्तारण सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम शुरू किया है। सीजीआई ललित के पास कुल कार्य दिवस भी बेहद कम है। जस्टिस ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और सीजीआई के रूप में उनका कार्यकाल कुल मिलाकर 74 दिन का है और अगर छुट्टियां हटा दी जाएं तो और भी कम दिन उनके पास बचते हैं। लिहाजा वो मुकदमों की सुनवाई पर लगाने की व्यवस्था को सरल और सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सीख भी है कि अगर कम दिन में भी बहुत काम करना हो तो किस तरह से किया जाए। साथ में न्यायिक कार्य समय का एक एक पल उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मुकदमों की सुनवाई की चल रही व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन किया है। कोर्ट की सुनवाई को अलग अलग खंडों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव नियमित सुनवाई के दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लगने वाले रेगुलर और मिसलेनियस मामलों की सुनवाई को लेकर किया गया है। जस्टिस ललित ने सुबह से लेकर लंच तक पुराने लंबित रेगुलर मामलों को सुनवाई पर लगाने का निर्णय लिया है और दिन के दूसरे भाग यानी कि लंच के बाद मिसलेनियस यानी नए मुकदमों पर सुनवाई की जाएगी। ऐसा शायद इसीलिए किया गया है कि ताकि नए मुकदमों के कारण पुराने लंबित रेगुलर केस की सुनवाई न पिछड़े, जबकि पूर्व की व्यवस्था में इन दिनों में शुरुआत में मिसलेनियस मामले सुने जाते थे और उसके बाद दिन भर रेगुलर मामलों पर सुनवाई होती थी। सीजीआई ने और अधिक बेंच बनाकर शीर्ष अदालत में 71,000 से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई पर जोर दिया है। नए सीजीआई के पहले 4 कार्य दिवसों की यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 18,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया। वहीं सबसे बड़ी पहल है संवैधानिक बेंच बनाने की। सीजीआई ललित ने 2 संवैधानिक बेंच बनाए जो संवैधानिक मसलों को सुना करेगी। अपने पहले कार्य दिवस में उन्होंने 29 अगस्त से सुनवाई के लिए 25 संविधान पीठ मामलों को सूचीबद्ध किया। अंतिम बार संविधान पीठ का गठन मार्च 2021 में मराठा आरक्षण की सुनवाई के लिए किया गया था। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमन्ना के कार्यकाल में एक भी संविधान पीठ का गठन नहीं हुआ। सीजीआई ललित ने केस मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर दिया है। केस प्रबंधन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीशों के समय और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो। अपने कार्यकाल के दूसरे दिन में ही जस्टिस ललित ने 2 आदेश दिए जो कि अहम मसलों पर स्थगन नहीं होगा ये था और तत्काल लिस्टिंग की अनुमति भी मिलेगी। सीजीआई के काम करने के तरीके में टाइमलाइन पर बेहद जोर रहता है। अभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने वकीलों को हिदायत दी कि मुद्दे तैयार पहले से कर लें। इसके लिए मसौदा उन्हें तैयार कर दिया गया है। साथ में ये भी पूछा गया कि बहस कितने दिनों में खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्य मामलों में सुनवाई शुरू करने से पहले हम फिर से लिस्टिंग करेंगे ताकि सुनवाई प्रभावी ढंग से संचालित हो सके। जाहिर है कि सुनवाई को सुव्यवस्थित करने पर उनका जोर साफ तौर पर दिख रहा है, जिससे कि सुनवाइयां खत्म हो सकें। सुप्रीम कोर्ट में नियमित स्थानांतरण याचिकाएं या रेगुलर ट्रांसफर पिटिशंस आम हो गई हैं। ज्यादातर स्थानांतरण याचिकाएं ऐसे मामलों में दायर की जाती हैं जो कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाते हैं और अदालत को केवल दिए गए मामलों के तथ्यों के आधार पर मामले को स्थानांतरित करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ पर बहुत वक्त जाया होता है। ऐसे में 2 जज बेंच के बजाय सिंगल जज बेंच ही इन याचिकाओं को सुने, जिससे कि मैन पावर और वक्त कम लगे। ये नई सोच आई। उच्चतम न्यायालय की इस समिति के प्रस्तावों के संदर्भ में टेक्नोलॉजी के समग्र उपयोग को बढ़ाने की भी जरूरत महसूस की गई। अपने छोटे कार्यकाल में ललित साहब ने जजों की नियुक्ति पर भी जोर दिया है जितना कि जस्टिस रमन्ना ने दिया था। सीजीआई यू ललित के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए मंजूरी दे दी है। ये सीजीआई के रिफॉर्म की जो एक कोशिश है उसमें मदद करेगा। आज हम सीजीआई ललित के तमाम पहल और कामकाज के तरीके पर विश्लेषण करेंगे। इसके लिए एक बेहद वरिष्ठ और अनुभवी पैनल भी हमारे साथ है, लेकिन पहले इस नई पहल की जो हम बात कर रहे हैं उस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। नए चीफ जस्टिस ने पदभार संभालते ही सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को सुधारने की जो पहल की है उसके नतीजे दिखने लगे हैं। अदालती कार्रवाई में तेजी आई है और मामले जल्द निपटने लगे हैं।
71,000 लंबित केसों के बोझ को चुनौती की तरह लेते हुए जो पहल किए जा रही है वह मिसाल बनती दिख रही है। शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। One area which is listing, and I must assure you that we will strive hard to make listing as simple, as clear and as transparent as possible. Number two, the area which is mentioning of urgent matters, that also I will certainly look into. I will have a word with all my learned colleagues on the bench, and we will certainly sort that out, and very shortly you will have a clear-cut regime where any urgent matters can freely be mentioned before the respective courts. The third area, and that is of listing of matters before the constitution benches and matters which are specially referred to benches of 3 judges. पदभार संभालने के बाद जस्टिस ललित ने बेहद पेशेवर तरीके से कामकाज के तरीके में बदलाव किया। इसकी झलक पहले ही कुछ दिनों में दिखी। पहले दिन सीजेआई ललित ने 25 संवैधानिक बेंच के केस लिस्ट किए। सीजेआई ललित ने 2 संवैधानिक बेंचों का गठन किया। स्थगन पर सख्ती, अर्जेंट लिस्टिंग की अनुमति। पहले 4 दिनों में कामकाज में 106 पुराने मामलों का निपटारा हुआ। पहले 4 दिनों में 440 केस ट्रांसफर याचिकाओं का निपटारा किया गया। पहले 4 दिनों में 1293 नए मामलों का निपटारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 हफ्ते में 1293 मामलों का निपटारा किया। सीजेआई ने 60 केसों को 3 घंटों में सुनने का बनाया रिकॉर्ड। जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि ये संदेश हर जिले, हर इलाके में जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तेज रफ्तार से काम कर रहा है। जस्टिस ललित की कार्यशैली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब वकील अपनी दलीलों की टाइमलाइन दे रहे हैं। स्थगन कम हो रहा है, फैसले जल्द लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों कई अहम मामलों पर सुनवाई हुई और कईयों का निपटारा हुआ। मसलन कप्पन की जमानत याचिका, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई मामला, नुपुर शर्मा केस, प्रशांत भूषण अवमानना केस, हिजाब मामला, गुजरात दंगे, CAA, EWS आरक्षण आदि। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट नए दौर से गुजर रहा है, जो आने वाले प्रधान न्यायाधीशों के लिए भी मापदंड रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और सीजीआई के इन नई पहल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ MK शर्मा, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जन कल्याण दास, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय जैन, प्रोफेसर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के और पूर्व प्रिंसिपल भी रहे हैं ILS लॉ कॉलेज पुणे के। दीपिका किन्नल हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर रेजिडेंट फेलो हैं विधि की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Justice Sharma, I'll come to you. How do you see the initiative of CJI Lalit to improve the functioning of the Supreme Court? Well, the initiative of Justice Lalit is definitely praiseworthy and welcome. Or we need number of forms in the listing of cases, hearing of cases. Yes. So these are taken care of, done by Justice Lalit. He is the head of the judiciary, and as the leader, he is to the front. I believe that he will win. I believe that all the cases which are in the Supreme Court should be taken care of. There must be some innovative way as to how to deal with those matters and decide them as early as possible. But what I feel is that in the Supreme Court there are pendency of about 71,000 cases. But if you look at the pendency of cases in the High Court and the Supreme Court, The figure is much more. Very large number of cases are pending in the High Court, about some lakhs of cases. Whereas
In the district court also, it is more than 4.1 crore of cases are pending. This is astonishing. So, I request and my expectation from Justice Lalit will be that Sir. while looking into the cases, disposal of cases in the Supreme Court, he must also think of and advise as to what should be done so far these cases which are pending in the other courts are concerned. But the reason of the backlog, you see, it's not very hard to say. Number of cases have increased because of the increase in the population, Sir. and also because the litigants, the people have become very, very conscious of their rights. And so they are approaching the court to vindicate their grievances. So I believe cases will definitely multiply. Sir. But at the same time, the judges must be able to deal with those cases. And this is a long pending issue, because when I was a judge in the Supreme Court, we had about 50,000 cases pending. The numbers have gone up now. It is about 71,000. Sir. So almost half of the pendency that we have. So therefore, I believe the initiative that he has taken will definitely yield some results, and if it yields some results, then the same methodology could be applied to the pendency in the district court and also in the high court. इन दी हाई कोर्ट। बिल्कुल। जन कल्याण दास, जिस तरह से जस्टिस ललित ने पुराने जो लंबित नियमित मामले थे, जो रेगुलर मामलों को सुबह से लेकर दोपहर तक सुनने की बात कही है, और उसके बाद मिसलेनियस या नए केसेस को सुनने की बात दोपहर के बाद कही है, डू यू थिंक, जैसा जस्टिस शर्मा ने भी बोला कि इससे काफी फर्क पड़ेगा जो पेंडिंग केसेस हैं, डू यू थिंक सो सर कि इससे फर्क पड़ेगा और कुछ फर्क दिख रहा है आप लोगों को? जी देखिए, दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इज मे नॉट बी जो कहते हैं इंटरस्टेलर लूना माइनर्स, मतलब मून अमंग लेसर स्टार्स, बट ही सटनली प्राइमस इंटरफेरेंस इन दिस जुडिशियल सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वी हैव एन इंटीग्रेटेड and hierarchical, independent and integrated judicial system. इसमें under Article 141, the law laid down by the Supreme Court is binding upon all courts and tribunals across the country. अगर आप Article 145(3) of the Constitution को देखेंगे, वो provide करता है कि whenever in any cause or matter there is the cause involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, it has to be referred to 5 judges. Yes. तो ये जो Constitution bench की जो matters है, they actually lay down the law. Pendency का एक कारण नीचे भी है कि हर कोई कहता है कि ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास है, मैटर खत्म होने दो। जैसे आपने पहले बताया कि 2021 ऑलमोस्ट होल ऑफ 2021 में एक भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डिसाइड नहीं हुआ था। एक हमारा जो मेन जो सेटअप जो है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अब जो है इम्पोर्टेंस दिया है, इट हैज शिफ्टेड एंड दे आर गिविंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस टू लेइंग डाउन ऑफ द लॉ, which is the primary duty of a judiciary of the judicial system in a federal setup like India. तो इसीलिए he's tried to strike a balance between the SLPs and also the constitutional bench matters, so that justice can be done to all the litigants. इससे ये होगा, constitutional bench matters से pendency बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये रेफरेंस देगी कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और डिसाइड नहीं हो रहा है, लेट इट बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड एडजर्नमेंट आफ्टर एडजर्नमेंट हो रहा है। बिल्कुल। तो देयरफॉर बाकी जो है उनका एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है, ही बीइंग प्राइमस इंटर पारेस अंडर द हमारा सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर भी द फॉर्मेशन ऑफ द बेंच
how to reshuffle the bench, ये उनका absolute prerogative है, Chief Justice, Honorable Chief Justice. So therefore, as they say, the nature of the chair is what the incumbent makes it. जैसे इन्होंने टेकअप किया है as Chief Justice, तो उनका विजन जो है वो विजन है कि जितना हर तरह से कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स सेटल हो जाए, लॉ सेटल हो जाए, तो हाई कोर्ट में पेंडेंसी कम हो जाए थोड़ा बहुत, और यहाँ पे भी जो है मैटर जो है नए नए फ्रेश मैटर आते हैं, एक ओवरऑल इम्पैक्ट जरूर दिखे तुरंत ही। डॉक्टर संजय जैन, इस सुझाव को आप कैसे देखते हैं जहां पर जस्टिस यूई ललित ने स्पेशलाइज्ड बेंचेज बनाए हैं और जिसमें वो जज रहे जिन्हें खास मसलों पर विशेषज्ञता हो, ये बात जब उन्होंने कही है, इन बेंचों पर उन्हीं मसलों की सुनवाई हो जिससे मामले तेजी से निपटेंगे, जो आज तक एक इस तरह से नहीं बिल्कुल देखा गया था और एक नई पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है, आप इसको कैसे देखेंगे? मुझे लगता है, आई फील दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बेंचेस may be a good idea, but it is also a very controversial idea. Because in my opinion, a judge must be specialized in all laws, because we don't pick and choose judges based on their specializations in particular subject matters. And therefore we have to be very careful in, striking a balance between, choosing judges for specialized benches and, looking at institution of a judge as such. Because when you say that, okay, a particular judge is has expertise in a particular subject matter, what do you presume? Do you attribute inexpertise to that judge in other matters? Therefore, I think it's a good recipe, but how it would test would depend upon how we engage with it. But I think idea sounds novel, and when I was looking at this report, I realized that when the bench for the taxation cases was constituted, the cases were disposed of quickly, and there was a bench on social justice issues. Again, the matters were dealt carefully and quickly. But still, I believe that, what should be the criteria to pick and choose judges for constituting specialized benches is, I think, a key issue. But nevertheless, it's a novel initiative. जिस तरह से जस्टिस ललित की ये नई बातें या नया स्टाइल जो कहा जाए वो आया है, विधि ने बहुत सारी मूलभूत सुधार के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत सुधार के लिए बहुत सारी सिफारिशें की थी। क्या आपको लगता है कि यही वो रास्ता था जिसको विधि अपनी सिफारिशों में दिखा रहा था? Right. So, absolutely. So, CJI Lalit has actually taken several steps which we had already identified in the report, which is have certainty in processes. The biggest problem that the Supreme Court and in fact all courts across India face is that we don't know when the matter will get listed. The fact that the CJI has taken this up and now there is more clarity and consistency which leads to transparency, it will ensure that lawyers and litigants know what is actually happening in the Supreme Court. So efficiency will definitely be there in the coming weeks. Now, with respect to how he is actually dealing with the overall case load of the Supreme Court itself, it is commendable that one of the key areas he has identified is that of constitution bench matters. We've already spoken about it. He has taken up 25 matters in the first week itself. What is even more important is that he has said he will be having at least one constitution bench functioning throughout his tenure. This is one of our key recommendations, that there be a permanent constitution bench. Over the last few decades, what has happened is the Supreme Court has gone on from being a constitutional court to a pure appellate court. Right now, as we know, the pendency is around 71,000 cases, and on a yearly basis, around 70,000 fresh matters are filed in the Supreme Court. And out of that, around 80% of them are special leave petitions. The Supreme Court, out of these 80% special leave petitions, grants leave to at least 50% of those cases. So the Supreme Court has truly become a court of appeal,
as opposed to the original intent of the constitution makers, which was to see the Supreme Court as a constitutional court. Essentially what the gentleman before me said, which is under Article 145(3). The Supreme Court will look at important substantial questions of law requiring interpretation of the Constitution. But from 1950s, the Supreme Court used to take up nearly 15% of its caseload to be Constitution bench matters. Yes. But today it is less than 1%. So the fact that now CJI Lalit is bringing attention back to Constitution bench matters seems like the Supreme Court is regaining its original. Justice Sharma is with us, Deepika. Justice Sharma, here only I want to ask this question to you. In your view, how to improve the functioning of the constitutional benches? See, I believe our country and our Supreme innovative judgment which has been delivered by the Supreme Court through the decades, and they were very well appreciated all over the globe. And therefore, and we have number of about 53 constitutional bench matters pending in the Supreme Court. And I feel that Supreme Court should start taking up these 53 pending constitutional matters as early as possible. In fact, I had advised some of the retired Chief Justice of India also to start taking up these matters, but somehow or the other, some other cases got priority, like Ayodhya cases, which also required an early disposal. But I believe that these constitutional matters could be taken up now, and we have about 30 judges available. So we can definitely spare 5 judges for hearing matters. And when we have the entire strength of 34 judges, then we can have probably 2 benches hearing those constitutional matters, and I believe then we will be able to get some very good judgments on the constitutional laws. And well, we need to see also dispose of the other matters also, the special leave petitions and other appeals and all criminal appeals which are pending for a long time. Sir. They cannot be ignored. But those cases also should be heard simultaneously. And as Justice Lalit has done, he is giving emphasis both to the new cases as also to the old cases, which is very, very, very innovative, and I think it is very welcome. Bilkul. Janakalyan Das, sir, Janakalyan Das, I'll come to you. Listing is the biggest problem. I mean, till now, listing was a biggest problem. जो मामलों की तारीखों और जो बेंच में हेरफेर करने के आरोप हमेशा रजिस्ट्री पर लगती रहती थी, वकील कई बार इसको लेकर अपना कंसर्न दिखा चुके हैं. हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको लेकर अपना कंसर्न दिखाया था. आपको क्या लगता है कि जस्टिस यू ललित के आने के बाद और इसको कैसे हैंडल किया जा रहा है और कुछ सुधार आपको दिख रहे हैं वहाँ पे? जी, लिस्टिंग के मामले में तो देखिए, it has been a long-standing grievance of the Supreme Court Bar Association कि only big ticket cases are getting priority and average litigant जो है उसका केस लगता नहीं है, goes on, advance list पे निकलता है, then gets offloaded and suddenly some urgent matter is mentioned and then it is listed. So इसमें transparency कैसे लाएंगे, इसको reshuffling कैसे करेंगे, that is the exclusive lookout of the Chief Justice because the registry is directly under him. बिल्कुल. तो इसमें लेकिन बस यहाँ पे एक बात और कह दूं कि जिस तरह से सीजीआई ने नो एडजमेंट की बात कही है कि जो नीति अपनाई है, आपको लगता है कि उससे लिस्टिंग पर काफी फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो जो सिस्टम था पहले कि आप किसी बहाना पे एडजर्न करा लो केस को, तो एडजर्नमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा. और अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अमेरिकन प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इज फॉलोड इन यूएसए में आउट ऑफ ऑल द पिटिशंस फाइल्ड इन 1 year ओनली 1% केसेस आर टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट.
यूएस सुप्रीम कोर्ट। Yes. अब जो है यहाँ पे जो है हमारा तो 136 के पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है एसएलपी, तो एसएलपी बिकम माउंटिंग। Yes. तो उसको therefore the one approach would be to how to screen a really important question of law जो आता है public importance, उसी को एडमिट करें। दीपिका, आई विल कम टू यू। जो एसएलपी की समस्या है, जो बात अभी जन कल्याण दास ने भी कही, एसएलपी के लगातार जो ये लोड बढ़ रहा है अदालत पर, खासकर सुप्रीम कोर्ट पर, इसको लेकर किस तरह के समाधान विधि ने सुझाए थे? जी, हमने स्टडी किया था, वो 2015 में था। Then we discovered that SLPs, civil and criminal put together, constitute nearly 82% of the fresh cases that are filed on an average basis every year. And out of this 82%, as I mentioned, nearly 50% are actually granted leave. The biggest intervention that the court can make at this stage is to have a better filtering mechanism, which is to have a higher barrier for admission. Any other court that you take, be the US Supreme Court, Canada Supreme Court, there the admission rate is mostly in the range of 10 to 15%. Indian Supreme Court, on the other hand, has a very high rate of admission of appeals. So some clarity with respect to what are the kinds of cases that the Supreme Court itself wants to take up will be helpful and have a higher threshold. And even here, when they look at how SLPs are distributed across different judges, we started in 1950 with around 8 judges. Now we have a sanction strength of 34 judges. How can you ensure that these SLPs are equitably distributed such that it gets disposed regularly and efficiently? CJI Lalit's suggestion has been that there will be 15 two-judge benches sitting regularly on a daily basis to hear these smaller matters, and I think this is a step in the right direction. This combined with admission of fewer appeals will be helpful. Yes. Justice Sharma, if we talk about SLP, there is a growing bulk of SLPs in the Supreme Court. If I go through with the statistics, Supreme Court dismisses about 80% SLPs. How can Supreme Court discourage lawyers and litigants to file non-serious appeals and SLPs? Now, see, so far this issue is concerned, it has to be left to the concerned judges who are dealing with those matters. Now, a few minutes back, there was a discussion about the specialized benches and judges being appointed to a particular bench who have expertise in that particular subject. I think that is also one of the necessities, because we must have expertise judges dealing with the subject matter in which he had all along been dealing with. This is one. And specialized benches, definitely, we have specialized benches like text benches. We have both direct, indirect, separately also. We have benches of service matters dealing only with service matters. And a judge who is dealing with these matters, if he is placed in that particular bench, I think he will be very effective and he will be able to dispose of the matters very effectively and meaningfully. So I believe that these benches, when they are constituted effectively by the Chief Justice of India, they will be able to deal with the matters, and that will definitely bring down the pendency. There may not be many admissions, because if they are well versed in the law and well versed with the facts of the case, then you see they cannot be taken for the judges cannot be taken for a ride by the lawyers, and they would be able to dispose of the matters in accordance with law, and wherever it deserves admission, they will admit those matters, and whenever they are not to be admitted, they would be dismissed. Yes. And as you said, there are a number of frivolous petitions filed. Appeals also, which do not have any merit, are being filed in the court. So, if a judge is expertise on the subject, he knows what is what immediately on going through the papers. Yes. And so, he will effectively deal with that matter. And if it is found to be frivolous, the matter has to be dismissed, and not only dismissed,
but it has to be dismissed with exemplary cost Yes. so as to deter the future generation and future lawyers, future matters coming in, Yes. so that the lawyers are debarred. ओके डॉक्टर यस डॉक्टर जैन, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपने अभी बोला कि जो स्पेशलाइज्ड बेंचेस हैं वो बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं है, पर यहाँ पर एक बात तो ज़रूर है सर कि अगर हम बात करें अगर एक्सपर्ट जजेस की या कुछ ऐसे अहम मसलों पर जो विशेषज्ञों की टीम अगर ब्रीफ करे जजेस को, जैसे कि एमेकस नियुक्त किए जाते हैं, टेक्निकल टीम नियुक्त की जाती है, ये एक अच्छी पहल हो सकती है। और साथ ही में यहाँ पर मेरा सवाल एक ये भी होगा कि जो SLP से जुड़ी हुई जो बात है वो ये है कि एक ओवरऑल अगर हम सीन देखें और परिवर्तन की बात करें तो SLP के रेफरेंस में, स्पेशल बेंचेस के रेफरेंस में आप इस नई पूरी पहल को कैसे देखेंगे? Well, I cannot but agree with you on the issue of a panel of experts briefing the various constitutional benches. In fact, in the company of panel of experts, the judges will become experts in many matters which they might not have handled as lawyers. So I think having panel of experts, in my opinion, is a better idea than merely focusing on specialized benches. And I think in UK, this practice of, taking assistance from a panel of experts has proved very effective, and Vidhi has referred the same in their report. And in fact, I fully endorse the idea of empanelment of experts. We should not pick and choose experts as and when we require, but there should be a ready list, like, you have the list of arbitrators. So similarly, you should have a list of empanelment of experts on different subject matters, so that whenever judges require a consultation, judges may resort to the expertise of these learned people. And of course, amicus is always there. The institution of amicus curiae is always there. So far as special petitions are concerned, I also believe that why we have completely given up the certification procedure. There was a time when before filing an appeal to Supreme Court, either orally or by making a written application, you would first seek permission from the High Court, and based on the permission of the High Court, the appeal will be filed. But nowadays, I think, barring rare exceptions, we have collapsed the distinction between the appeals and special petitions, and most of the cases are tagged under Article 130. So when a constitution itself provides two different avenues, one avenue for appeal and one avenue for special leave, it's a very, very discretionary jurisdiction. I think time has come to revive this dichotomy and handle 136 very, very sparingly, very, very carefully. And I agree with his lordship that exemplary costs must be imposed on litigants trying to bring frivolous litigation, particularly under 130. Because 136 is a very momentous jurisdiction of the court. It is a jurisdiction which should be used very sparingly. It should be used for only exceptional purposes. बिल्कुल। जन कल्याण दास, अगर हम बात नई पहल की करें और न्यू सिस्टम की करूं, अगर मैं सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो वकीलों पर ही है, और CJI ललित ने भी बहुत साफ तौर पर कहा है कि टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप बहस कितनी देर में कर रहे हैं, खासकर जब EWS आरक्षण की सुनवाई के दौरान CJI ने स्पेशली एडवोकेट से कहा कि आप अपने दलीलों को समय सीमा में बांधने की कोशिश करें, जो कि बाहर की प्रैक्टिस है। UK US में ये प्रैक्टिस चलती है कि आप समय सीमा में बोलें। साथ ही जो वैसे दलील हैं, वैसी बातें हैं जो मौखिक रूप से कही जा सकती हैं, वो ज़्यादा बोला जा रहा है रादर पेपर के तमाम दलीलों के हिसाब से। आपको लगता है कि इससे एक नए तरीके से, खासकर जो नए वकील हैं, उनको एक नए तरह का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा काम करने का, अपनी बातों को रखने का, और समय भी बचेगा अदालत का?
I fully appreciate and agree with the step taken by the Honorable Chief Justice. Because judicial filibustering, it has been criticized as judicial filibustering. जैसे American Senate में, you want to kill a bill, आप बहस करते जाओ. That is filibustering. Similar system was going on for a very long time, ever since I joined the profession. And more the seniors wait, ज़्यादा time उनको दिया जाता है, and the court never is to interfere. So for that reason, matters used to go on, constitutional matters used to go on for months at end. तो इसलिए इसको streamline करना बहुत जरूरी था, and I think the Honorable Chief Justice Lalit has taken the right step, क्योंकि in all other jurisdictions of the world, there is always a time limit prescribed, red light जल जाता है, there you stop. So therefore, list of dates, those छोटा सा, what is the crux of the matter, and your time frame is given. You finish your submissions within this time frame. Don't drag it out for extraneous considerations. I am sorry to say, at times you come to the heart of the matter, straight away address it, and then let the judges decide. Yes. And simply because you go on, there have been cases in which you go on reading from books Yes. for 1 day, 2 days, 3 days for absolutely irrelevant considerations, and honorable judges, because of their stature and maybe other things, they get so, and they are also very, lenient judges. They go on hearing and then go on hearing. So therefore, this is a very, very positive step. It was much needed and should have been brought much earlier. Justice Sharma, do you have any experience about this kind of situation when it's go on, beyond the logic and beyond the time? Sure. See, when I was a judge, now specially petitions were taken up by the judges and were disposed of within no time, within 2 minutes, 3 minutes. But when it comes to regular, means the final hearing, it goes on and on and on, which is, I believe, was not justified also a lot of, because lot of matters are pending. We must be conscious of the other matters. So therefore, this initiative that he has taken is welcome. I believe that there should be a time limit for argument put. And because, you see, after completing the final arguments, the oral arguments, there is a scope of filing the written arguments also. That's exceeded. And if both are taken together, because we used to take note, and even I believe the judges are taking a very explicit note when hearing the matter. So those combined with the written arguments, I think we will be able, the judges will be able to deal with the matters very effectively and very meaningfully also. Yes. That I think is necessary to put time limit, then followed by a written argument. And I believe there is one more aspect which I would like to highlight here. Now, I have seen the specially petitions which are filed. They are very lengthy and complicated sort of thing. It should be crisp and to the point, and it has to be cut down to about 10-12 pages so as to cover the entire point. Otherwise, you see what happens, the judges, when they go through these petitions at their residence, they have to spend quite a lot of time to understand what is the actual crux of the matter. Yes. So therefore, I think the pleading should be simplified. It should be to the point and should not be verbose and, lengthy. This is what I feel. Yes. But Dr. Sanjay Jain, जब केस मैनेजमेंट की बात आती है तो जजों की तैयारी की बात आ जाती है, और ऐसे में जो लॉ क्लर्क्स होते हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको लॉ क्लर्क्स के सिस्टम में भी सुधार की ज़रूरत है. और आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ठीक करके जजों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ज़्यादा सुधारा जा सकता है? I feel that, Indian judges are doing amazing job when you look at the workload, in no place on earth except India. So many cases have to be read and decided by the judges. So I feel for them.
And in fact, when you look at the service conditions and other facilities, like look at the US Supreme Court judges and their service conditions and the comfort zone. So having said that, you're talking about law clerks. Of course, the institution of law clerk is a very important institution. And I think if we want law clerks to be effective and to assist judges properly, then we must also look at the present state of legal education. How we are prosecuting the LLB program, whether LLB program requires some changes so that the reasoning ability of the students can be sharpened. Yes. Because merely mugging up the cases, just writing long answers and passing through the exam. So nowadays there is clamor for multiple choice questions by taking this excuse or that excuse. So I think look at Justice Frankfurter or Richard Posner or other judges. They were law clerks earlier. So if you want a tradition of extraordinary clerkship, I think we must also look for reforms in legal education, and the attempt must be to sharpen the reasoning skill. I don't think, barring few law schools where legal method is taught in the first year itself, barring few law schools, except jurisprudence, which takes care of some kind of which takes care in a way of reasoning skill. But barring that small course of jurisprudence, hardly any effort is made in law colleges to sharpen the reasoning skills of the students. So whether it is a inductive reasoning, deductive reasoning, analogical reasoning, how to apply precedent. So we did reforms in legal education. बिल्कुल एक ओवरऑल इसको एक सिस्टम में लाने की ज़रूरत है और ख़ासकर हमारे एजुकेशनल सिस्टम में. लेकिन दीपिका, ई कोर्ट की जो परियोजना थी, जो ई कोर्ट का जो प्लान था टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का, हालांकि CJI यू ललित के पास बहुत कम वक्त है, इस पर भी उन्होंने जोर देने की कोशिश तो की है, लेकिन कहाँ तक इस परियोजना को आप देख रही हैं कि सक्सेस की ओर बढ़ रहा है? So that it becomes at least a part of the system for the subsequent CJIs to continue. Now, it is clear that CJI Lalit is interested in bringing in transparency and ensuring that scheduling of cases progresses in an efficient manner. Now, a tool exists which is used in other industries called intelligent scheduling system. Now, an intelligent scheduling system can be used for any purpose. In the context of judiciary, it will be used for intelligently scheduling cases. Now, if you have such a tool embedded in, say, the Supreme Court, it will help the judges to ensure that they have their calendars organized in a manner that actually takes into consideration their caseload. Now, this is obviously beneficial for the court. And one of the ways that CJI Lalit is doing it is by saying that in the first hearing, I will set the timeline for the entire case. Now, added to that, a technology layer, which is an intelligent case scheduling system, will ensure that it will give you appropriate dates for each of that hearing. If a case has 10 hearings, then when do you list those 10 hearings? So all the parties go back with a lot of certainty. And the second important outcome of such a system will be that there will be certainty of timeline for a litigant. Right now, a litigant enters the system without really knowing when his case might get decided. If he is filing writ petition civil, how long will it take? If he is filing a criminal appeal, how long will it take? It's very subjective. So bringing in technology-driven solution to ensure transparency and certainty will benefit all the stakeholders. Now, coupled with that, I will just like to add one point to what the professor just said. Of course, you need to have law clerks. Clerkship is an important system. However, if you have research tools which are advanced, it will actually help significantly reduce the time spent on each case. Currently, it is not being used to the fullest ability. There are law journals, there are online law journals, but how much of it is actually being made available to our judges? There are research tools that
Harvard Law School, for instance, and even National Law School in Bangalore, the students use much more advanced tools than what our judges do. And coupled with that, I think there is also a need to systematize the way judges write their judgments. I know this is not a very popular opinion, but judges write judgments for 300 pages, 400 pages. Yes. Can we make But I that think precise for that, and concise? Deepika, Supreme Court is experimenting with artificial intelligence, and now they want to, go ahead beyond that, and they're trying different kind of technology to incorporate. And I hope बहुत जल्द जब चंचूर साहब बनेंगे, इस पद पे आएंगे, बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस पूरे परियोजना को देखा है, तो शायद वो सब भी चीज़ें देखने को मिलेगी, और बहुत दूर नहीं कि जब हम मेटावर्स में भी शायद सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को देख रहे होंगे। बट बहरहाल अगर मैं फिजिकल कोर्ट की बात करूं, जन कल्याण दास, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सेशन, बेल मैटर्स, सिविल मैटर्स को लेकर जिस तरह से लगातार जो नंबर्स बढ़ रहे हैं इनके, और ये सुझाव दिया गया है कि पायलट के रूप में ही 2 जजों के बेंच को बनाया जाए। व्हाट डू यू फील, हाउ प्रैक्टिकल इट इज? Before that, I will put a caveat. I think it's better because the wording of Article 136 clearly says you can file a special petition against any order. Yes. Not only the High Court order, but against any order. There have been many cases in which straight away against any order of the trial court also people have come and they have clocked the court calendars. Therefore, one way of going to solve this problem is appoint 2 registrar judicial and delegate them the power through whatever mechanism is permissible under the law, so that they can see initially and give a certificate that it is fit to be put before the bench. अभी जो रजिस्ट्री का रोल है वो खाली ये देखते हैं कि सारा सिस्टम में है, एक्चुअली वो जरूरत के हिसाब से है या नहीं, सीधे उठा के लगा देते हैं. They get the matter listed. So if at least some delegate mechanism is there as to against which order you have come, and a short note is, unless you satisfy that particular forum first, you should not be allowed to go and appear before the judges. जी, बिल्कुल. That can be considered because Article 136 is against any order. जी, बिल्कुल. इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के केस में भी आ जाते हैं, नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर के केस में भी आ जाते हैं. That will to a large extent somebody has to screen it at the initial level. बिल्कुल. जस्टिस शर्मा, एक फाइनल वर्ड, हाउ टू हैंडल द ओवरलोड ऑफ ट्रांसफर पिटिशंस, एज जन कल्याण दास ने भी यही बात बोली है. CJI Lalit cleared 440 transfers in first few days of his tenure, but still dependency is too much. How to deal with this? So far these transfer petitions are concerned, they are very small matters. You see, you don't need a very extensive argument on those matters. Similarly, see, there are matters like appointment of the arbitrators as required under Section 11 of the Arbitration Act. These are very small matters and could be disposed of very early. I believe a bench has to be constituted to look into these small matters, because small matters are also to be given due weightage along with the longish matters. And I believe these transfer petitions are very small matters and don't need very elaborate argument. Nor does it require a very lengthy judgment also. Very short judgment is good enough. So I believe it could be taken care of. There should not be any difficulty. There may be pendency of these transfer petitions at the moment, but could be dealt with, and could be dealt with very effectively. Yes. So कुल मिलाकर यदि देखें तो एक नई पहल की ओर सुप्रीम कोर्ट बढ़ रहा है. हालांकि बहुत लंबे समय से ये समस्या पेंडेंसी की चली आ रही है, और जस्टिस यू ललित को शायद ये बात समझ में आ गई है कि एक बार और बेंच दोनों के सहयोग से ही कुछ नया हो सकता है. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि प्रोफेसर जैन ने भी बताया, कि एजुकेशन के सिस्टम में भी, लीगल एजुकेशन के सिस्टम में भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस और परिवर्तन की ज़रूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए. और इंडिया लीगल में अब हम इस बात की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि जो ये नई पहल हुई है, बहुत
कम समय के लिए भले ही CJI बने हैं जस्टिस यू ललित, लेकिन चूंकि वो बार से आते हैं तो उनको बार की भी समस्या पता है और बेंच में आने के बाद वो ये भी समझ रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही पक्ष अदालत की दुनिया के एक ही लक्ष्य को लेकर चलें। तो और लक्ष्य ये है कि किसी तरह से अदालत को लोगों की पहुंच तक रखा जाए और एक्सेस टू जस्टिस की कल्पना को सिद्ध किया जा सके, ज़मीन पर उतारा जा सके। तो हम उम्मीद ये करेंगे कि बहुत जल्द इस देश में जो पेंडेंसी की समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। आने वाले दिनों में तमाम नए प्रयोगों के साथ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जब बनेंगे और उनके बाद भी तमाम जो जजेस आएंगे, जो CJIs आएंगे, वो इस समस्या को ख़त्म करने में सफल होंगे। इसी उम्मीद में आज इंडिया लीगल में इतना ही। नमस्कार।